Measures of central tendency. Suppose that a teacher gave the same test to two different classes and following results are obtained. फर्ज करें कि एक टीचर ने एक ही टेस्ट दो मुख्तलिफ क्लासेस से लिया और नीचे दर्ज किए गए रिजल्ट्स हासिल किए। क्लास 1 80%, 80%, 80%, 80% and 80%. Class 2 60%, 70%, 80%, 90% and 100%. If you calculate the mean for both sets of scores, अगर आप दोनों का मीन निकालते हैं दोनों सेट्स का, क्लास 1 का भी और क्लास 2 के स्कोर्स का भी, you get the same answer, तो आपका एक ही जवाब आएगा. But the data of two classes from which this mean was obtained, लेकिन जो डेटा है दो क्लासेस का जिससे ये मीन हासिल किया गया, was very different in two classes, वो मुख्तलिफ थे. It also possible that two different data sets may have same mean, के दो मुख्तलिफ डेटा के सेट्स हैं उनका मीन जो है सेम है, मीडियन भी सेम है एंड मॉड भी सेम है. फॉर एग्जांपल क्लास ए 72, 73, 76, 76 एंड 78. क्लास बी 67, 76, 76, 78 and 90. Therefore class A and class B have same mean, mod, median. इसमें मीन, मॉड और मीडियन जो हैं वो इन क्लास ए और क्लास बी के दोनों के सेम है. The way that statistics distinguish such cases as this is known as measuring the variability of the sample. As with measures of the central tendency, there are a number of ways of measuring the variability of a sample. Probably the simplest method is to find the range of sample. There is difference between the largest and smallest observation. The range of measurement in class 1 is 0 and the range in class 2 is 40%. Simply knowing that fact gives a much better understanding of the data obtained from the two classes. In class 1, the mean was 80% and the range was 0, but in class 2, the mean was 80% and the range was 40%. Statistics use summary measures to describe pattern of data. Measures of central tendency refer to the summary measures used to describe the most typical value in a set of values. Here we are interested in the typical most representative score. There are three most common measures of central tendency are mean, mode and median. A teacher should be familiar with these common measures of central tendencies. Mean. The mean is simply the arithmetic average. It is sum of the scores divided by the number of scores. इसमें नंबर्स का जो सम है, नंबर्स को जमा कर लें और फिर देख लें कि टोटल नंबर कितने थे जो हमने जमा किए हैं, उस पर डिवाइड कर दें. It is computed by adding all of the scores. ये कैसे मालूम किया जा सकता है, तमाम scores जो हैं वो आप ऐड कर लें and dividing by the number of scores, और जितने नंबर हैं स्कोर के अंदर उससे डिवाइड कर दें. When statistics talk about the mean of the population, जब जो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं, उसका मीन देखते हैं. दे यूज द ग्रीक लेटर म्यू, वो ग्रीक लेटर म्यू यूज करते हैं टू रेफर टू द मीन स्कोर, मीन स्कोर को रेफर करने के, शो करने के लिए. व्हेन दे टॉक अबाउट द मीन ऑफ ए सैंपल, जब वो किसी सैंपल का मीन बता रहे होते हैं, दे यूज द सिंबल एक्स डैश एक्स बार to refer the mean score. X bar is equal to sigma x divided by n. X bar when computed on sample. Median or MD. The score that cuts the distribution into equal halves or middle score in the distribution.
The median of a set of data values is the middle value of data set when it has been arranged in ascending order. This is from the smallest value to highest value. Example, the marks of 9 students in a geography test that had a maximum possible mark of 50 are given below. 47, 35, 37, 32, 38, 39, 36, 34 and 35. Find the median of this set of data values. Arrange the data values in order from the lowest value to highest value. इसमें आपने इनको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले जो लोएस्ट वैल्यू उसको पहले लिखना है, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू आएंगी. The fifth data value 36 is the middle value in this arrangement. इसमें जो सेंटर वाली जो वैल्यू है 36, वो जो हमारा मेडियन होगा. मेडियन जो है इसका क्या है 36. मेडियन n इज ऑड. अगर n जो है ऑड है, मेडियन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वो वाली टर्म हमारे पास होगी. n इज इवन. अगर जो नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ डेटा में जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज वो इवन है, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 to observation. n is the number of data values in the sample. If the number of values in the data set is even, then median is the average of two small values. Fortunately, there is a formula to take care of the more complicated situation, including computing the median for group frequency distributions. Mode. Mode is the most frequency occurring score. Note, there can be more than one can have bi or tri-modal distribution, and then speak of major and minor modes. It is simplified as MO. Example, find the mode of 2, 2, 6, 0, 9, 6, 8, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4. Solution 4 is most frequent occurring score. Therefore, mode is 4. तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होगी किसी डेटा में, जो रिपीट हो रही होगी, वो हमारे पास